Hi again. Let's start. Today I'm taking percentage. In this chapter, we are going to explore something really important, percentages. They are like a special kind of math tool that help us talk about parts of a whole, but in a way that's easy for everyone to understand. Imagine everything as if it is made up of 100 parts. Percentages lets us express how many parts out of those 100 we are talking about. It is a simple and useful way to show values, and you will see how it comes in handy in lots of everyday situation. Okay, when I talk about parts, what does it mean? Let's assume that there is a pizza. Pizza has four slices. If I eat one slice, so how much part of the pizza have I eaten? So there were four slices earlier, initial, and I ate one. So this is how we represent a part of something. Alright, let's explore more about percentage. Fraction to percentage. Now, fraction plays an important role to find out percentage. What is fraction, by the way? Fraction is something when a number is represented in a form of p by q. If you multiply p by q by 100, then it will convert to something r percentage. Like 1 by 2. 1 by 2 if I multiply by 100, will get converted into 50%. Alright. What if I convert 1? What will be 1 as a percentage? So 1 ko if I divide by 1, it will remain 1 anyway. So if I multiply by 100, it will convert to 100%. You see यहाँ से यहाँ पे जाने में this number is divided by 2 and this number also get half. Alright, let's again divide 1 by 2 को. मैं इसको अगर entirely को 2 से divide करता हूँ. The same time, if I divide 50% को भी 2 से, then I'll get 1 by 4 and it will be 25%. So अगर मैं आधे को आधा करूंगा तो 50% का आधा हो जाएगा. So 1 by 4 को if I further divide by 2, it will get 1 by 8 and 25 को अगर 2 से divide करेंगे तो we'll get 12.5%. What if I again divide 1 by 8 को 2 से? It will be 1 by 16 and this will further divide to 6.25. Alright. Let's take 1 by 3 now. 1 by 3 को अगर मैं convert करता हूँ 1 by 3 को percentage में, so what I'm doing here, dividing 100 को by 3 से. So 3 times 9 minus किया will get 1 and this 0 will get down. 3 again 9 again we'll get minus करने पे 1. So we'll put up decimal and take 0. 339 and this will keep going on, right? So 33.33% is nothing but 1 by 3%. 1 by 5 1 by 5 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? दैट विल बी 20%. 1 by 6 that will be equal to 16.66%. 1 over 7 that will be 114.28%. Similarly 1 by 9 that will be equal to 11.11%. 1 by 10 that is equal to 10%. So if I want to figure out 10% of anything, I just divide the number by 3. 1 by 11 that is equal to 9.09%. 1 by 12, if I convert 1 by 12 into percentage, I simply divide 1 by 4 को 3 से. अगर मैं इसको 3 से divide करूंगा, 1 by 4 will get 1 by 12 and 25 को 3 से divide करेंगे, so we get 3 8 times 24 और 1 बचेगा and that will continue. So 8.33%. So 1 over 13 तो अगर percentage में convert करेंगे, we'll get 7.69%.
1/14 is half of 1/7. तो 1/7 को हाफ करेंगे तो 1/14 हो जाएगा. अगर मैं 14.28 को हाफ करता हूँ, it will be 14 का होगा 7 and 28 का होगा 14%. तो 7.14 is 1/14 का परसेंटेज. 1/15, 1/15 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/5 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ. तो 20/3 करेंगे तो 6.66% होगा. एंड दिस विल कीप कंटिन्यू. ऑलराइट. नाउ इसमें ना पर्टिकुलर नंबर्स हैं, यू शुड रिमेंबर, लाइक 1/6. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच कम्स very often in exam. 1/7, 1/9, 1/11. Keep these numbers as a percentage. 1/6 is 16.66%, and 1/7 is 14.28%. 1/9, 11.11, and 1/11 is 9.09%. They these kinds of numbers asked in exam very frequently. Okay, let's take multiples of fractions. When I talk about multiples of fraction, what that does it mean? Like 2, 4, 6, 8, 10. These are the multiples of 2, right? And we also have multiples of fractions, like 1/2. 1/2, if I convert 1/2 into percentage, that will be 50%, right? What about 2/2? That's a second time multiple of 1/2. We get converted, see 1 होगा ये तो 100% होगा. If I further divide 3/2, third multiple of 1/2, इसको convert करेंगे तो see, this is a pattern set of 1/2 50, 2/2 100, 3/2 1/50 होगा ये. 4/2 क्या होगा? So that will be equal to 200%. What about 5/2 now? And that will be equal to 250%. See, this is making sense. Pattern में setup होता जा रहा है. So let's take 1/6. So 1/6 को करेंगे तो we get 16.66%. 2/6 को करेंगे तो that is nothing but 1/3. तो ये होगा 33.33%. What about 3/6? It's 1/2, nothing but 1/2. It's not 49 point something from that. It will be equal to 50% because we can further divide to 1/2. So ये कट के वैसे ही 1/2 हो जाएगा. That will be equal to 50%. Now 4/6 कितना होगा? If you see this thing, this is 2/3. So 1/3 होता है 33.33. 2/3 होगा 66.66. So 4/6 होगा 66.66%. Okay. Now what about 5/6? तो ये फिफ्थ मल्टीपल है 1/6 का, तो इसका होता है 83.33%. So keep this thing in mind. 1/9 का कितना होगा? See, if we take 1/9, that's 11.11%. So 2/9 होगा 22.22. 3/9 होगा 33.33. 4/9 होगा 44.44. एंड 5/9 होगा 55.55. Okay, let's take one last. 1/11. So 1/11 का होगा 9.09 होता है. So 2/9 होगा, सॉरी 2/11 होगा 18.18. 3/11 होगा 27.27. 4/11 होगा 36.36. एंड 5/11 होगा 45.45. So keep these numbers in mind because in question kinds of questions in exam, these kinds of questions they ask.
Let me take an example. What if they ask कि 22.22% of 900 or like 36.36% of 121. So we can't go traditionally कि 36.36 को decimal हटा के 100 का लेके नीचे and solve करेंगे तो वो बहुत complicated होगा. So instead of this we can directly replace this number. So 22.22% is nothing but 2 by 9 होता है. So 2 by 9 into 900 that will be equal to 200 होगा. So that's our answer. And 36.36% की जगह मैं directly replace कर सकता हूँ 4 by 11. So 4 over 11 multiply 121. So इसका आ जाएगा 44 answer. So that's how we use these numbers. Alright, you should remember. By see, this is a pattern 11.11222 333 4444 555. This is a pattern set up on 1 by 9, like 9.09 1818 2727 3636 4545. This is based on 1 by 11 का some kind of multiple. So just keep these things in mind and start practicing it. Alright. Let's take next slide. Percentage to fraction. Earlier we have learned how to convert fraction to percentage. Now what about percentage to fraction? Let's say if I have 100%, इसको मुझे करना है fraction में convert to 100. This will get rid of by taking 100 नीचे और convert करेंगे तो 1. So we can say कि 1% 100% equal to 1 होता है. What about 50%? 50% कितना होगा? We know already कि 1/2 होता है. How does this 1/2 come from? So 50 लिखते हैं और ये 100 ये परसेंटेज का साइन हट जाता है तो we get 100 नीचे. तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो we get 1/2. तो 10% कितना होगा? So 10 by 100 equals to 1 by 10. Alright, let's take last example for this 25%. तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो क्या होगा? 25 by 100 that is equal to 1 by 4. This is how we convert percentage to fraction. Okay, what is the use of this then? If I want to calculate 25% of 300, so what I need to do is to इसको convert करना पड़ेगा. If you तो ये हट जाएगा तो 100 नीचे आएगा and 300. So 0 will cancel out 0. 25 multiplied 3, 75. But don't do this thing when you get 16.66% of 600. This will complicate the situation. Instead of this, we can directly use इसकी जगह पे 1 by 6 or 600. We get 100. If you get convert fraction of 16.66%, it will get complicated and too much calculative. So try to avoid. Okay, let's take next slide. A percentage change क्या होता है? When a number increases or decreases, तो वहाँ पे there's a change of number, right? Let's say कि A is a कोई person has a weight in 2023 में 50 kg. इसका weight था 50 kg, but in 2024 he gain a weight and become 60 kg. So how much weight has been increased from 2023 to 24 in terms of percentage? So how do we calculate? This is a percentage change, right? We know कि यहाँ पे 10 kg of increment हुआ है, right? So 10 kg increase हुआ. How earlier it was 50 kg, right? If I multiply this fraction by 100, we get 20%, right? And there is a formula also percentage change के लिए. You can refer formula. This is final value minus initial value over initial value multiply 100. Okay, what 50 or 60 are initial value and final value? Initially it was 50 kg and finally it becomes 60 kg by increasing 10 kg. So this is how we calculate percentage change. It goes forward and backward also. Let's assume कि I had weight of 50 kg but it reduces to 30 kg. So how much percentage change is there?
See, earlier it was 50 kg, but now it is reduced by 20 kg and become 30 kg. So 20 का decrease हुआ, so percentage में convert करेंगे तो कितना होगा? That will be equal to 40%. So 40% of weight has been decreased. When you apply this thing in the formula, there is a negative sign comes, right? Let's say if I apply this thing in formula, so final value is like ये है final value क्योंकि reduce हुआ है, initially 50 था, so final 30 minus 50 by 50 into 100. You see there is a negative sign over in the numerator. That negative sign represents nothing but that there is a decrease. ये negative sign क्या दिखा रहा है बस कि there is a decrease in the number. Alright, let's take next slide and learn more about percentage. Now base in percentage is very important. Once you get to know कि what values we have to substitute in numerator and denominator, then you reach the core of the percentage. Right? Let's say okay, there are two things. P over Q. When you multiply this fraction by 100, you get R%. So the point comes in mind कि what kind of value we substitute in P and what kind of values we substitute in R. So P represents numerator and Q represents denominator, right? तो न्यूमरेटर में हम किससे कौन सी वैल्यू रखते हैं एंड क्यू में हम कौन सी वैल्यू रखते हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग राइट व्हाट वैल्यू वी सब्स्टिट्यूट इन पी so what things are you comparing? What things? What are you comparing? You have to substitute in P. You have to substitute in P. And with what you are comparing? So you have to substitute in numerator or denominator. If you multiply this thing by 100, so you get something R%, let's say. You get data in percentage. Alright. Now keep this thing very clear. You have to substitute data in denominator. So which is जिसके साथ वो compare हो रहा है, right? Think this represents base or the initial value of anything. जिसके साथ भी आप compare कर रहे हो, C को हम लोग initial value बोल के represent करते हैं. Basically जैसे कि last वाले question में था कि 50 kg weight से अगर कोई 60 kg weight हो रहा है, right? So what is the initial number? So initial number was 50 and it changed to 60. So what value we have to substitute in base? We have to substitute 50 because we are comparing with 50, not with 60. 60 became after increment. Alright. So we have to substitute 10 here because we are comparing 10. So basically the difference, we are comparing the difference. So we have to substitute in numerator. Multiply 100. So इसको convert करेंगे तो कितना होगा 20%. Clear? Okay, let's move to next slide now. You have, I think, work on it. I think you should work on it. What value you should substitute in numerator and denominator. Once you get clarity over it, then you are good at percentage. Okay, let's take next slide. So we have question which comes in exam like 2019 CAT. In an examination, the score of A was 10% less than that of B. The score of B was 25% more than C, and the score of C was 20% less than D. If A scored 72 marks, then the score of D was what? Now this is a very basic question. You should understand how to solve this thing. We'll take two, three different approaches. Let's see. Method 1. Score of A was 10% less than that of B. Let's say this is A, this is B. If B has X score, then what is the score of A? Now A का score क्या था? 10% less than that of B. So B minus B into 10%.
सो बी में से अगर हम 10% रिमूव कर देंगे तो जितना भी आएगा वो ए का होगा. सो बी को आई अज्यूम एक्स एंड एक्स मल्टीप्लाई 10%. डू यू रिमेंबर वन थिंग आई टोल्ड यू कि 1 इक्वल्स 100%. रिमेंबर. सो मैं यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई एक्स लिख लेता हूँ. डजेंट चेंज एनीथिंग. इंटू 10%. सो 1 will represent 100% now and 10% of x. इनको माइनस करेंगे तो वी गेट 90% ऑफ एक्स और 90 बाई एक्स. सो 9 बाई 10 ऑफ एक्स हो गया. दैट्स द स्कोर ऑफ ए. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि द स्कोर ऑफ बी was 25% more than score of B was 25% more than C. Let's take this thing and find out कितना है. हमें B का ऑलरेडी पता है तो फाइंड आउट C का इस बार. इसको साइड में कर लेते हैं. B C. Now B का we already know this is X. The score of B was 25% more than the score of B was 25% more than of C. ये बोला हुआ है इसने. ओके नाउ B का भी नो X है. C 100% ले लेते हैं यहाँ पे. 100% ऑफ C प्लस 25% ऑफ C. तो यहाँ पे ये हो गया 125% ऑफ C. इफ यू कन्वर्ट टू फ्रैक्शन तो क्या होगा यहाँ पे ये 5/125/100 into C. This will be 5/4 of C. now but we have to figure out C के लिए. तो यहाँ पे C कितना हो जाएगा. 4 ऊपर चला जाएगा. 4/5 of x हो जाएगा. so 4/5 of x. now next part में क्या गिवन है क्वेश्चन के. we read and the score of C was 20% less than that of D. Okay, that's the last part of the question. Let's figure out. C and D. Now C का we already know 4/5 of x. तो हमें बस अभी D के लिए figure out करना है. The score of C was 20% less than that of D. D minus 20% of D. Now C का कितना है 4/5 of x एंड यहाँ पे 1 लेके यहाँ पे 100% ले लेते हैं. 100% of D minus 20% of D. That will be equal to for 80% of D, right? इसको I can write 80/100 of D. So this is 4/5 of D multiply है यहाँ पे and 4/5 of x. So 4 will cancel out 4, 5 will cancel out 5. So D का जो score होगा that will be equal to x and that's the same score of B. Now we know कि A has scored 72 marks. So 9/10 of x equals to 72. So we need to figure out D का score. and D का score है x. तो अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी तो I done with the question. So x को यहाँ पे रखते हैं 972. 10/9 इसको शिफ्ट कर देते हैं LHS से RHS में. 9 इसको कैंसिल आउट करेगा 8 टाइम्स में and we get the value of x as 80. Alright, so answer for this question is 80 marks. Let's move to next. Arun's present age. Okay, let's take one more method यहाँ पे. I forgot, sorry. This is method 1 and there's one more method now. वो थोड़ा रेशियो का है and we have to assume a numbers now. ठीक है, चलो इसको लेते हैं. In an examination, the score of A was 10% less than that of B. So A, B, मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ. A का स्कोर 10% लेस देन है B से. तो B का स्कोर 100 ले लेते हैं अभी के लिए. इमेजिन करो 100 है तो B का 100 है और A का 10% लेस है. तो 10% ऑफ 100 इज 10. अगर हम 10 कम कर देंगे 100 में से वी गेट 90. सो दिस इज स्कोर ऑफ A. इसको रिड्यूस करेंगे तो वी गेट 9/10. ये स्कोर हो गया A का. नाउ B रेशियो C. The score of B was 25% more than C. Now
सी को इस बार 100 ले लेते हैं, और बी का कितना है, 100 से 25% ज़्यादा है, तो 100 का 25% 25 होता है, इफ यू ऐड विल बिकम 125। इसको रिड्यूस करोगे भी गेट 5/4। लेट्स डबल इट, क्योंकि यहाँ पे बी 10 है, यहाँ पे 5 है, इसको डबल कर देंगे तो रेशियो में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो बी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली नाउ। सी रेशियो डी, एंड स्कोर ऑफ सी इज 20% लेस देन डी। तो सी कितना है, लेट्स से दिस इज 100, तो ये होगा 80। एक जीरो रिड्यूस कर देते हैं यहाँ से, तो वी गेट 8/10। सो सी यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे भी 8 है, परफेक्टली सेटअप हो रहा है सब कुछ। तो A/B, B/C, C/D, सबको साथ में लिख लेते हैं। A 9 है, B 10 है, C 8 है, एंड D 10 है। ऑलराइट, नाउ A हैज 9x, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 72। तो x कितना होगा यहाँ पे, 8। Okay, what, where does this x come from? If you remove a number from ratio, you will have to apply one variable with it. Okay, so 9x equals to 72, then x is equal to 8. Now d has 10x, so 10 multiply a, this is 80. So let's move to next question now. Arun's present age in what? Arun present age in years is 40% of Barun's age. I'll solve this question by taking a ratio and all. That would be quite easier to solve this question. Arun's present age is in years is 40% of Barun's age. So Arun equals to 40% of Barun. So A equals to होगा 4/10 of B, और A equals to होगा 2/5 of B, right? In another few years, Arun's age will be half of Barun's age. So after a certain number of years, so let's say कि after y years के बाद A plus y, right, and B plus y, after few years, Arun's age will be half of Barun's age. ये बोला है इसने। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई A प्लस वाई इक्वल्स टू बी प्लस वाई। एक वेरिएबल पे हटा लेते हैं, यहाँ पे वी नो ए इक्वल्स टू 2/5 ऑफ बी है, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ यहाँ पे, 2 × 2/5 बी प्लस वाई, यहाँ पे बी प्लस वाई है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/5 ऑफ बी होगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2y। नाउ वी बी प्लस वाई, बी वाली टर्म्स एक तरफ रखते हैं और वाई वाली टर्म्स एक तरफ रखते हैं। सो 2y माइनस वाई, बी माइनस 4/5 ऑफ बी। ठीक है, रेस्ट पार्ट इधर सॉल्व कर लेता हूँ। सो वाई इधर बचेगा, 2y माइनस वाई वाई, और उधर सॉल्व करेंगे तो वी गेट 5b, टेकिंग एलसीएम 5b माइनस 4b/b 5। राइट, यहाँ पे अपने पास आ गया 1/5 इंटू बी, दैट्स इक्वल्स टू वाई। So we get b equals to 5y. Okay, what kind of question they ask now? By what percentage will Barun's age increase during the period? So यहाँ पे हो क्या रहा है कि, okay, मुझे ना यहाँ तक ही रखना चाहिए था इसको, कि जो y is the number of increase, number of years increase, right? तो अगर b का पहले 5 होगा तो it will increase by 1, right? Clear? I'll take another method. This is a fractional version of method. I'll take numbers पे इसके बाद। तो दिस रिविजन की अगर उसका 5 होगा तो 1 इंक्रीज हो जाएगा उसका, so this is a 20% का इंक्रीज यहाँ पे। फॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20%। तो उसका पहले कितना था और अभी कितना हो गया,
So we have to see this thing. ठीक है? So for answer for this question is 20%. Let's take another approach. बहुत simple होगा वाला. Arun's age is present year में कितना है? 40% of Varun's age. So A equals to 2/5 of B. इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं. A रेशियो B. So B के नीचे 5 है तो इसका रेशियो 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा. So A has 2x of weight here and B is 5x age, right? And another situation में उसने बोला in another few years Arun's age will be half of Varun's age. So अरुण का एज है 2x. अगर उसमें y years ऐड हो जाएंगे तो ये क्या होगा कि 5x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 को इधर भेज के ये 4x हुआ प्लस 2y 5x प्लस वाई. तो ये 2y माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 5x माइनस 4x. दैट इज कितना होगा यहाँ पे x एंड यहाँ पे y. सो y इक्वल टू x हो गया. तो बरून्स का एज कितना है इनिशियली प्रेजेंट में 5x. अगर उसमें एक साल और बढ़ जाएगा तो बरून का एज हो जाएगा 6x. क्योंकि बाद में क्या हो रहा था उसका 5x प्लस वाई हुआ था. तो y की वैल्यू अगर x है तो हम लोग उसको रिप्लेस करके 5x प्लस x ऐसे 6x कर सकते हैं. तो ये प्रेजेंट एज है उसका. ये फ्यूचर एज होगा आफ्टर y ईयर्स. ठीक है. तो कितना इंक्रीज हो रहा है जैसा कि 1x का इंक्रीज है. पहले कितना था 5x इंटू 100. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20%. ठीक है. Let's move to next question now. Successive percentage. Now, successive percentage is a kind of a very important topic if you talk about SICI. So SICI में इसका ना बहुत extensive use है. To solve a question in SICI, very very best method of solving SICI के question is successive percentage. Okay, what is successive percentage? It means if you have a number 100, you increase this number by 10%, it will become 110. Then again this number is increased by 10%. तो हम इनिशियल नंबर को इंक्रीज नहीं कर रहे, वी आर इंक्रीजिंग द इंक्रीज्ड नंबर. तो इसी को इंक्रीज कर दोगे 10% से, इट विल बिकम 121. सो दिस इज कॉल्ड द सक्सेसिव परसेंटेज कि इफ यू आर इंक्रीजिंग अ नंबर it becomes a new number. Then again that number is increased by a certain percentage. So you're increasing a number successively. Okay? तो यहाँ से लेके इनिशियल से लेके फाइनल तक का ओवरऑल चेंज कितना होगा 21%. There is a formula also to solve this thing, alright, which is a plus b plus a multiply b. यहाँ पे a and b क्या होते हैं, वो परसेंटेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. इन दिस थिंग लेट्स से कि a is 10% and b is 10%. वाई एम टेकिंग दोनों को 10-10% क्योंकि वो दो बार ही इंक्रीज हुआ है 10-10 से. ठीक है. 10% प्लस 10% प्लस 10% मल्टीप्लाई 10%. तो 10 प्लस 10 20% हो गया. ये जीरो कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 1% बचेगा. दैट इज इक्वल्स टू 21%. सी what happens if we apply this thing for three times. Let's take 100. First it is increased by 20%. It becomes 120. Then this number is increased by 25%. This becomes 150. This number is increased by 10% and it finally becomes 165. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज कितना है 600 से 165 हो गया. इट इज 65 का इंक्रीज हो रहा है डायरेक्टली. अब यहाँ पे क्या होता है ना कि यू कांट अप्लाई दिस डायरेक्टली टू फॉर्मूला बिकॉज वहाँ पे वो दो के लिए ही एप्लीकेबल है. वी हैव टू अप्लाई फॉर 3. देन वी हैव टू पेयर अप कि ए को 20% मान लेता हूँ, बी को 25% मान लेता हूँ. इनसे जो रिजल्ट बनेगा वी हैव टू पेयर अप विद 10. तो कितना होगा 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25. ये तो 45 हो जाएगा तो प्लस हो गया. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा प्लस 5 50%.
अब दिस 50% को अगर मैं पेयर अप करता हूँ 10 के साथ तो कितना होगा 5, यहाँ से 5 बचेगा, ये 60 हो जाएगा, 60 प्लस 5 65%। Now this is also used to find out discount, but discount में क्या होता है, चीजें reduce होती है, तो if something is reducing तो we have to apply minus sign because minus shows that the things is reducing. Let's take a question on it. Two successive price increase of 10%, 10% of an article equivalent to a single price. So we have seen 10%, 10% बढ़ेगा तो क्या होगा, एक सिंगल परसेंटेज के कितना इक्विवेलेंट होगा ये, 10 plus 10 20, 20 plus यहाँ पे 1, that will be equal to 21%. So answer for this question is 21%. Successive discount of 10%, 20%, 30% is equivalent to a discount of what? See यहाँ पे ये डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, right? तो वी हैव टू टेक इसको -10% क्योंकि वो रिड्यूस होगा, -20% and -30%, and we have to solve as it is, right? -10 plus -20 plus -10 into -20, तो ये तो 30 हो जाएगा यहाँ से नेगेटिव पे, ये दो जीरो कटेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये गेट 2, सो यहाँ से हो गया 28%. Let's pair this -28 with 30. -28 -30 -28 -30, तो यहाँ से ये 58 हुआ, प्लस माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा ना, 28 इंटू 3 होता है 84, 84 को 10 से डिवाइड किया तो ये बना, कितना बनेगा 8.4. इफ यू सब्ट्रैक्ट 58 माइनस 8.4 तो कितना आएगा 49.6. So 3 discount of 10%, 20% and 30% is equal to 1 discount of 49.6%. I have one more approach for this kind of question, but that involves fraction and ratio also. Let's take that one. उसके लिए क्या करते हैं हम लोग ना, 10% को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू 1/10. 20% को कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1/5. 30% को फ्रैक्शन में डाल देंगे तो क्या होगा 3/10. हाँ, इसमें ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इनिशियल वैल्यू, और ये न्यूमरेटर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी का परसेंटेज में जो चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज. सो इनिशियल वैल्यू तो फाइनल वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं. सो इनिशियली कोई नंबर अगर 10 था और वो 1 रिड्यूस हुआ बिकॉज यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर हो रहा है और डिस्काउंट रिड्यूस हो जाता है, सो फाइनल वैल्यू बिकम 9. सो 1 रुपये रिड्यूस हो गया 10 पे. इसके लिए अप्लाई करेंगे तो पहले 5 था, उसमें एक रिड्यूस हुआ, इट बिकेम 4. यहाँ पे 10 था इनिशियली, इसमें रिड्यूस हुआ एक 3 का तो ये हो गया 7. तो एंटायर इनिशियल वैल्यूज कितना है 10 इंटू 5 इंटू 5 और 10, दैट विल बी इक्वल टू 500. एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36, 36 मल्टीप्लाई 7, तो कितना होगा 36 मल्टीप्लाई 7, इफ यू मल्टीप्लाई यू गेट 9 मल्टीप्लाई 36, 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7. इट 252, राइट. अब अगर मुझे चेक करना है कि यहाँ पे कितना डिस्काउंट ऑफर हुआ, बेसिकली कितना था, पहले 500 था इनिशियली एंड उसको डिस्काउंट ऑफर करते करते ये 252 पे आ चुका, तो कितना चेंज हुआ यहाँ से
So the number is reduced by 248. The discount is offered is 248 divided by 500 into 100. तो इसको खत्म करोगे तो you get कितना? 5 4s are 20, 5 9s are 45 and 6 46%. So the discount is 49.6%. Okay, यहाँ तक समझ आया? This is the very basic things I have taken in this chapter. Alright. इसके ऊपर ना बेस्ड कैट में जितने क्वेश्चंस आए थे या फिर अदर एग्जाम्स में जितने क्वेश्चंस आए थे इजी टू मॉडरेट मॉडरेट टू डिफिकल्ट आई एम गोइंग टू टेक ऑल दोज क्वेश्चंस वन बाय वन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑलराइट स्टे ट्यून्ड